अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हम्माद एंड आज हमारे साथ दो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर कम ही ऐसे पावर डुओ कपल्स होते हैं स्पेसिफिकली आर्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर। हमारे साथ पहले गेस्ट जो हैं वो हैं वकास खान, हु बिलोंग्स टू अख्तराबाद बट द गार्डियन जैसी न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने हेडलाइन की हुई है। एंड देन वी हैव हर वाइफ बुशरा वकास खान हु हैज़ हर ओन आइडेंटिटी, जो कि who belongs to a feudal background, who is from मियांवाली, but NCA की she was a top student, not just NCA, but NCA के बाद उन्होंने वोग, ट्रिब्यून, ये सब कुछ जगहें उन्होंने हेडलाइन की। अस्सलाम वालेकुम। So हम लोग if we dive right into it, तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि अगर आप ये थोड़ा सा बताना चाहें इसके बारे में कि NCA की स्टूडेंट, टॉप स्टूडेंट और उससे पहले मियांवाली एंड देन यू नो हेडलाइनिंग वोग, ट्रिब्यून, हाउ हैज दिस कम अबाउट? Okay, so मियांवाली is my parental city and then there's a village. हम लोग का गाँव भी वहीं पे है, known as कमर मिशानी. But I was born in Multan and I was raised there. Even Multan को भी हम अभी भी it's like a developed city, but we still call it a गाँव. So by that time art education या art field का कोई concept नहीं था. Still we lack in that there, but somehow we were 6 siblings. मुझे हमेशा से लगता था that something is not on the right track and कुछ बहनें डॉक्टर्स बन रही थी, एक ने MBIT किया है, भाई they were in their business. So I was like, that's not what I want to do. And then there was this series PTV पे उस टाइम में आता था, known as College Genes, which was filmed in NCA. And वहाँ से पता चला कि कुछ आर्ट की भी पढ़ाई है. So from there I applied and I got in, and then it was a whole new world to explore there. अच्छा वकास, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अख्तराबाद अब 17 years के बाद वहाँ से यू मूव्ड आउट ऑफ अख्तराबाद, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अख्तराबाद के बाद NCA स्कूलिंग एंड देन NCA एंड उसके बाद गार्डियन तक का सफ़र, हाउ डिड दिस कम अबाउट? एंड जहाँ तक जो हमारे एक इनसाइड सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि आप NCA के अंदर यू वर नॉट ए ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, लेकिन आर्ट्स के अंदर आपने एक्सेल किया एंड गार्डियन के अंदर आपने हेडलाइंस की. And how did this journey come about? Assalamu alaikum. मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो आला तालीम के लिए लाहौर आते हैं. So I belong to this village called Akhtarabad, which is in Okada. So ending up in Lahore was just any parent's dream from that remote areas basically. So वो तो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे. तो आई एंडेड अप इन NCA थ्रू कैफेटेरिया बॉय who took me to NCA from the back gate of NCA just to show me a space cake. And I remember his dialogue. He said to me, Khan sahab aur tanu ek college ukha ke le aao. So I never knew anything about arts or any kind of visual activities, I would say that, because having a connection of that part of the world कि जहाँ पे चीज़ें सिर्फ दो तरह से देखी जाती हैं कि आप डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं. तो मेरे लिए तो एक ऐसा कल्चरल शॉक था कि मैं तो एक गांव का लड़का जो एकदम एक ऐसी जगह में पहुँच गया. And then it took me 3 years. That is another story. It took me 3 years to apply every year to get inside NCA. But I was not getting the admission. And yeah, there's my claim of fame. I was not a brilliant student, but I was a brilliant student in many ways. You're a brilliant, I think, person in many ways. So yeah, so from there to the rest of the world, I think that space has taught me enough, a lot. Because that space is not about just a structure inside. It's
So you were actually meeting so many people from all over the country, from Hunza to Hyderabad. So it's like a very communal space. And number two, you are part of the different performances in that space. So I would say that I was more involved in those activities, except my little classes. Except that. Basically, This is what they say about NCA कि आप जब जैसे जाते हैं वहाँ पे वो 4 साल या 5 साल हम लोगों का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, so it was 4 years, architecture is 5 years. You're never the same person, and that's very right. No matter आप कहाँ से आए हो, आप बदले हुए इंसान होते हो, good or bad, but आप बदले हुए होते हो. बेसिकली विकास, मेरा आपसे ये स्पेसिफिकली सवाल है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आपने आर्ट्स की तरफ जाना है, विजुअल आर्ट्स की तरफ जाना है. पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्यू एग्जांपल्स, आपको बड़ी थोड़ी एग्जांपल्स मिलेंगी जो कि आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स की तरफ जाएगी. तो बेसिकली व्हाट इज दैट वन एलिमेंट व्हिच यू नो इंस्पायर्ड यू? आपने कहा बनना है तो आर्टिस्ट ही बनना है. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है. So it was by a fluke. No, it just happened because the thing is, when I was giving my thesis, this is a very important point. I happened to be in NCA through just because I'm a man with a story. I'm not a man because somebody introduced me these spaces about this. Yes. So there's a cafeteria boy who introduced me to this space, which is Back NCA. gate, through the back gate. Through the back gate, okay. So I was just there, I was having fun, I was having a really good time. But I never thought of that I'm going to be an artist. Because I was involved in so many other things and I was just doing my own stuff. This happens during my thesis time, when I was giving my thesis. I just stumbled upon this dot, which the work I'm producing even now, like I would say that. I just stumbled upon this dot, I don't know, something happened. And so that my car boot becomes my studio space. So I just started the work just out of nowhere. I didn't knew anything at that time that about the galleries, about the music, because I was not involved in these activities. So I wouldn't say that मुझे बचपन से ही शौक था आर्टिस्ट बनने का. मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है. हाँ, because एज ए प्रोफेशन इसको नहीं लिया जाता. अभी भी बहुत सारे घर हैं, स्पेशली इफ अ मेल मेंबर फ्रॉम द फैमिली दे से दैट हमने आर्टिस्ट बनना है, दे आर लाइक कमाओगे कैसे, लाइक व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग गोइंग टू बी. अभी भी मुझे स्टिल क्वेश्चन अभी भी इलाके मेरे में जो, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट लाइक प्रॉपर्ली, जो कि मैं अभी भी करता हूँ. तो अभी भी लोगों को वहाँ पे जो मेरे लोग हैं उनको ये पता है कि मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को बताता हूँ आर्टिस्ट कहते हैं क्यों होता है. इसी बात से मुझे याद आया, मैं रात को घर के अंदर डिस्कस कर रहा था कि मैंने सुबह इंटरव्यू लेना है, ये सब कुछ होना है. तो उन्होंने कहा कि अब तो आर्ट की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी हुई है और अगर तुम भी आर्टिस्ट बनना चाहो तो बन लो, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद. बट दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड लेवल पे आप किंडरगार्टन से शुरू करें, आप उसके बाद मिडिल स्कूल में जाएं, हाई स्कूल में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में. आई एग्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देयर आर गुड टीचर्स, गुड इंस्ट्रक्टर्स, स्पेसिफिकली आर्ट के उसके अंदर. बट डू यू थिंक पाकिस्तान जनरली लैक्स आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट एज अ होल, यू नो, एक जॉब के लिए जगह, जैसे उन्होंने वकास से पहले शुरू में बात की कि डॉक्टर इंजीनियर ही सिर्फ होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो डू यू थिंक पाकिस्तान लैक्स के आर्ट की एज ए करियर, एंड उसके अंदर किसका मेन पिवटल रोल है टू चेंज दैट परसेप्शन इन द कंट्री? आई थिंक चीज़ें बदली हैं, बहुत ज़्यादा बदली हैं, बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड ऑन अ लॉट ऑफ गोल्स. लाइक आपने किंडरगार्टन की बात की, वी हैव 2 lovely boys, 6 years and 3 years. Art is treated as an extra lesson in the institutions. And वही बात है कि अगर बच्चा मैथ में वीक है और टेनिस में अच्छा है या किसी क्रिएटिव फील्ड में अच्छा है, तो पेरेंट्स जो हैं वो मैथ टीचर हायर करेंगे, ना कि एक टेनिस कोच. Just reason because they think ये तो काम बिल्कुल फारिग है, लाइक क्या करेंगे इसको लेके, नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, नो नथिंग क्रिएटिव. सो उनका फोकस पहले दिन का ही पेरेंट्स का होता है ना, दे हैव टू बी गुड इन एकेडमिक्स. बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अब खैर विद
जितना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को आती जा रही है, चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गई हैं, बट स्टिल हम में वो चीज़ें अभी भी हैं. वी स्टिल नो कि भाई जस्ट यू सेड कि रात को जब मेरी बात होती है लाइक ये कर लो उसके बाद आप परस्यू करना. सो दैट्स व्हाई वी आर लैकिंग. हम एक फील्ड में जीनियस हम बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड इन आवर इनिशियल ईयर्स अर्ली लर्निंग में. बहुत बाद में आके तो फिर आपको जो भी ट्रेनिंग है आपका इंटरेस्ट है यू गो इनटू दैट, बट वो जो आपके सारे साल होते हैं जहाँ आपकी वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर रही होती है, दैट गोज मिसिंग. एंड देन you know the geniuses are not there. So I think there is a lot we still need to catch up. Yes. अच्छा, नहीं इधर से मेरा आपसे एक ये सवाल है कि पाकिस्तान बीइंग अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी मेजरली एंड डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर है दे आर मेल डोमिनेटेड, राइट? तो पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ मिनिएचर एंड स्पेसिफिकली बड़ी एक यूनिक आपने फील्ड चूज़ की हुई जिसको इस यूनिक फील्ड के अंदर होना एंड इन द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज एंड इफ़ यू डिड देन हाउ डिड यू cater all those difficulties and eventually आपका वोग तक का headline करना, that is itself an inspiration stories for the coming generations. So yes, if you have anything to say to add to this. So I think that's very right. It's a very male-dominated society, but girls also now are very strong and very vocal that what they want and what they want to pursue. Myself, even the work that I do, I am a printmaker and I work with the motifs of affidavit stamp paper. Again, उस stamp paper का एक reason नहीं है, बहुत सारे reason हैं, but one of that what I would like to highlight is law of inheritance. Yes. Again, female are kept very much. अभी भी वो जैसे I make miniature garments, quarter scale garments में बनाती हूँ affidavit stamp paper की cut out collages के साथ. So जैसे हमारी माएँ अपने कपड़े heirloom कपड़े जो होते हैं वो they pass it on to the daughter. ये जो piece of paper है जो हमारा inheritance piece of paper है ये pass on हो जाता है to the male in the family. बेटों को ये चला जाता है, which women are very much kept deprived of. Again, it highlights it like कि उनके जितने rights हैं they should get that. So being artist हमारी तो बहुत बड़ी responsibility है that we highlight it.